Hello, 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 hello. I hope I'm audible. I hope. Yeah, it's good. Sound is good. So, am I audible and visible? Hello, 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 hello. I hope. I hope sound is good. So, am I audible and visible? I hope I am audible and visible. Hello, hello. Hi everyone, welcome to my YouTube channel Classes with me. Am I audible, visible, both? I hope because sound is clear right now. Visibility is also clear, by the way. Okay. Hello, hello.
Okay, let's check. I hope everything is clear here. Yeah, right. Just let me check once. Yeah, it's good. Okay. So, hi everyone. Welcome to my YouTube channel Classes with me. Today we gonna continue with assignment 10 question number 6 phone number cleaning. ठीक है? We'll be continuing with this phone number cleaning, right? Correct? And also we will be working on some doubts. ठीक है? Phone number cleaning, data cleaning work using SQL. ठीक है? We will do that thing. So, okay, let me just check once like everything is good to go. Mm, okay, that's good. Care project, yeah. Related to Power BI, we will do a question related to Power BI, right? Some questions means related to this. I mean to say, एक minute. So, okay, let me just check once. Okay, let's see. Let's check. I hope everything is good to go. Yeah. So, okay, let's start right now. So, let's start with the question. And just a minute, let me switch on these things.
Yeah, so where were we right now? Related to numbers, right? Numbers, I mean to say, related to just hmm, related to phone number cleaning, right? So for that, let me use this regex 101. What happened? Remove this thing. Yeah. So in this, what we have in the data, let's check. First thing first, let us check what we have in the data and what we will be cleaning, right? So for that, let us explore the data set. ठीक है, select everything from raw customers. Okay, chalo. In this, we have like this kind of phone number. Let's take this data here and oops, in this platform, right? Good. And let's see what we have in this, right? There are lots of issues we have right here. What issues we have? Let us check that out. We have space as usual. Space is there. Then we have this dash. Okay. Then we have this space and this symbols as well. Arithmetic symbols like plus and all those stuffs. Space again. So like this kind of things we have to remove in data cleaning part, right? So what things would be there during phone number cleaning? What issue anyone can face? Like first thing first, spaces. ठीक है. Second thing, this plus all those arithmetic stuffs. Then spaces between numbers, right? Then fourth, this dash between numbers, right? All those things, all those kind of things, or I would say all those kind of scenarios you will be facing when you would be cleaning this phone number kind of stuffs in SQL, right? Most of them. This is the, I would say, highest possibilities that you will be facing like this kind of scenarios, correct? So what we have to do in this, we have to use regex and we will be cleaning all those stuffs, correct? Just a minute. Just a minute. Let me check once what it is. Yeah. Okay, all good. Let me just check once. I hope everything is good to go. Yeah. So right now, I don't think anybody have doubt. Let me refresh once again. Uh, till now, no doubts, by the way.
Mhm. Just a minute, let me message my client. Uh, Let me refresh. I don't think I have. Okay, we have received one doubt from Keshav. Hi Keshav, welcome to live stream. Hi Keshav, welcome to live stream. Live stream. Hi Keshav, welcome to live stream. So we have one query from Keshav. Like, could you please tell me? Okay, hi Shubham. Yeah, could you please tell me about what is ad hoc analysis? Okay, ad hoc analysis. Okay, let me explain you in real scenario. Like during corporate work, I mean to say when we used to work in corporate. In that scenario, I'm explaining. It will be easy for you to understand. So what is ad hoc analysis? ठीक है, simple in corporate point of view. Let me explain this. Good question, by the way. Good question. Yeah, ad hoc analysis means quickly exploring data to answer sudden business question that don't have a ready-made report. I mean to say, suppose we need a quick answer on a urgent basis. Quick answer matlab, example I am saying, when I was working with the this finance team on early stage, ठीक है, when I was working with the finance team, and at that time it was quarter closing year, ठीक मतलब quarter closing था उस time, ठीक है. So that time most of the work that we were doing was ad hoc work, ठीक है. During ad hoc work, what we used to do, what process we used to follow, let me tell that. In that, our email, our Slack, both should have a automated, matlab this is on corporate point of view, both should have an automated message. What kind of automated message? Ki we are on ad hoc work right now. There will be delay in reply of any other messages apart from the particular team we are working with, right? That because first, this is the first rule. Like during our probation period, when we were on a training of 3 months probation period, at that time they have taught us all those things. Like this is the rules you have to follow, professional rules. If you don't follow this, then it will create a negative impact. First thing what we used to do when used to do some ad hoc analysis as a data analyst point of view, and as that was a quarter ending at that time, first step, automated message in email and Slack कि जो भी मैसेज मतलब जो भी मेल या मैसेज आता है, लाइक एनी मेल और मैसेज वी रिसीव from a different team or from a different domain which we are not inclined to or which we are not working with, they will get a delayed message. So apologies for that. First thing. That second thing, this is the professional way. Now let's go for the work basis. For work, we have to be highly active. For the mails, for mails means mails with what team we are working with. For the Slack, calls, yeah, meetings, yeah, messages for the particular team about the requirement. Why? Because ad hoc analysis means we have to quickly take care of whatever data we used to handle as per the, I mean, client point of view or stakeholder point of view. We have to quickly explore that, find the answer on, I mean, on a faster way. Means no wasting of time. That is the thing. No wasting of time. Most of the requirements in this ad hoc analysis was all about, I would say, cross checking kind of thing. Matlab, whatever cross check work our client or our stake, not client, but what our stakeholders used to do, they will be there in a call with you, or they will be in a
rapid message kind of thing with you, and they would be asking you all those things. ठीक है कि this things we need, this things we need to cross check, like have you find out the real data or like that kind of thing. ठीक है. And also it is usually done, if you ask me, I have usually done with Excel as well. Means Excel work is required at that time, not much, but I would say Excel work is required, kind of 10-20%. No doubt most of the work is dependent on SQL and Python. ठीक है. So this is the thing. Means ad hoc analysis and corporate point of view is all about quickly exploring data to answer the business question or the requirement question that does not have any ready-made report in front of you. मतलब you have to find on spot and you have to give the answer. No rooms for mistake and no rooms for, I would say, uh, मतलब there should not be any no answer in that. Answer should be yes, and there should not be any room for mistake, because that's a kind of very urgency kind of period or urgency kind of situation we used to go to. ठीक है. और ज़्यादातर it would be around most probably 1 or 2 hours, and this kind of work you will, I mean you will get notice about this kind of work like around starting of the day. ठीक है. Starting of the day, or most probably I would say most probably 2 hours ago. मतलब सपोज अगर आपका काम 12 o'clock को होने का रहता है, तो 10 o'clock को you will get a mail plus a message from the required team that be ready for the ad hoc work from this time to this time, or this time to this time, like this kind of scenarios. ठीक है. So that do your lunch, complete all the meetings, do whatever work is scheduled at that time, and please be ready to answer all the questions or all the requirement that we would be asking you during the ad hoc work. ठीक है. What tools we have used? SQL, Excel, Python, and mostly kind of supporting quick decision making kind of things are done at that time. So I hope you understood it related to ad hoc analysis. ठीक है. That is the thing. Hey, hi Jay, welcome to live stream. Welcome to live stream. Hi Jay, welcome to live stream. Hey, hi Virat, welcome to live stream. Hi Virat, welcome to live stream. So how are you all? Jay, okay, how are you doing? I am good Jay. How are you? How are you Jay? कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? Like today's weekend. I hope अभी थोड़ा मतलब बर्न आउट टाइप का हो गया होगा, बिकॉज इट इज दिसंबर, एंड ऑफ द ईयर, एंड वीकेंड भी है, तो थोड़ा आई थिंक चल रहा होगा ऐसा कुछ, राइट. और किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में, यू कैन आस्क, राइट. किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन दिस लाइव स्ट्रीम. ठीक है. Okay, we have one query from Virat. Okay, from Virat, let me just explain, like any explanation required. Okay. So we have one question like how to implement store procedure on dataset. Store procedure is created in dataset to run predefined SQL logic in your dataset. Like you write it once using this command called create procedure. ठीक है. Sorry, using create procedure and then execute it using this exec whenever needed, like whenever it is required. And what is the best part of it, like you can reuse the same transformation or query without rewriting the code again and again, so it is kind of time saving,
and also error reduction kind of thing. So there won't be any human error, because once you have written the query, you would be able to use it again and again. So there won't be any human error, and also time saving will be there. Okay, so that is the thing. ठीक. And what kind of work, if you ask me in detail, जैसे कि mainly filtering वाला work. ठीक है. मतलब जैसे कि फिल्टरिंग वाला वर्क, या तो क्लियरिंग काइंड ऑफ वर्क, आई एम क्लियरिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, क्लीनिंग काइंड ऑफ वर्क, इस तरीके से I have used it in my corporate sector when I was working in Flipkart and Amazon. That time I was using it. Matlab, it is not like ki this things, it is used only in these things. Not only I have used, personally I'm saying. Sometimes we have to update some data, like mostly during my Flipkart days, we have to update a lot of things in our SQL queries during our big billion day sale. So I've used a lot about it. So that is the thing. Matlab, same analysis transformation whenever it is needed, without rewriting the query again and again, you can use it. So that is the thing, right? Okay, we have one query from Keshav. Like in interview, the HR asking situation based question. Yeah, HR and managerial level question. It is like HR or मैनेजर लेवल इंटरव्यू. मैनेजर लेवल मतलब नॉट फॉर मैनेजर वैकेंसी. मतलब जब मैनेजर राउंड होता है, और आई वुड से आइस ब्रेकिंग राउंड जिसको बोलते हैं, काइंड ऑफ इन अमेजन देयर इज अ आइस ब्रेकिंग राउंड इंटरव्यू. तो उस टाइप के सिचुएशन में दे आस्क यू क्वेश्चन, मतलब सिचुएशन क्वेश्चन टाइप ऑफ है. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी मैनेजिंग योर टीम, और लाइक मैनेजिंग योर team, or you can say it is like managing your stakeholders. It is like that. ठीक है. It is mixture of all those questions. ठीक है. Okay, we have one query from J. I am doing pretty good, although I am not learning very fast, but it is good. कोई बात नहीं भाई, आप क्वालिटी पे ध्यान दो. ठीक है ना. आप सुने होगे ना एक चीज हमेशा, क्वालिटी इज द मेन थिंग. क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी. ठीक है. कोई बात नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दो. मेन वो है. ठीक है. क्वालिटी पे ध्यान दो. टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टिकना चाहिए. मतलब ऐसा ना हो जो आपने पढ़ा वो 1 से 2 हफ्ते तक टिका, ऐसा नहीं. भले ही लेट हो पढ़ने में, लेकिन मेक श्योर करो कि वो 1 से 2 महीने तक आपके दिमाग में बैठा रहे. ठीक है. इस तरीके का पढ़ो तो नो वरीज फॉर दैट, आई वुड से. स्लो पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. ज़्यादा टाइम तक याद रहना चाहिए, और प्रॉपरली समझना चाहिए. दैट्स इट. मेन बात वो है, प्रॉपर समझना चाहिए. ठीक है. मतलब कोई रेस नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा है. जे सब कंपनीज है, कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि अगर इंटरव्यू मिस हो गया कंपनी बंद हो जाएगा, फिर मैं वापस इंटरव्यू दे नहीं पाऊंगा. ऐसा नहीं है, बहुत कंपनीज है. टेक योर टाइम, जब राइट टाइम आएगा यू विल गेट योर ड्रीम जॉब. ठीक है. जब राइट टाइम आएगा. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि टाइम से पहले कुछ मिलता है, किसी को भी नहीं. किसी को टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता, कि किसी को टाइम के बाद भी कुछ नहीं मिलता. जब जो मिलना रहता है मिलता है. सो नो नीड टू वरी यार, जस्ट चिल. अब पढ़ाई में ध्यान दो, जो कि आप दे रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो. यू आर आस्किंग गुड डाउट्स एज वेल जे. ठीक है ना. डाउट्स वगैरह भी आप अच्छा पूछ रहे हो, ऐसा नहीं कि एनीथिंग आउट ऑफ द स्पेस यू आर आस्किंग. डाउट्स भी अच्छा पूछ रहे हो. यू आर बेस्ट थिंग अबाउट यू व्हाट आई हैव सीन, not only about you, lots of people like Keshav हो गया, and विकास हो गया, lots of people like they ask doubt, kind of deep dive kind of thing. ठीक है. तो जो लोग डीप डाइव वाला डाउट पूछते हैं ना, बेस्ट पार्ट इज यू नो व्हाट, वो समझना चाहते हैं. अगर आपको समझना रहता है समथिंग न्यू, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आते रहते हो, और आप उतना डीप डाइव करते रहते हो. सो बेस्ट पार्ट इज दैट आप लोग डीप डाइव क्वेश्चन पूछते हो, एंड उससे एक चीज पता चलता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक और इन दैट डोमेन. ठीक है. दैट इज द थिंग.
ओके, वी हैव वन क्वेरी फ्रॉम विराट। सर किस सिनेरियो में यूज कर सकते हैं? अच्छा राइट, जैसे मैंने कहा ना आपको, हम लोग कॉर्पोरेट का बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट से रिलेटेड में अगर आपको एग्जांपल दूं तो यही फिल्टरिंग, क्लीनिंग, अपडेट वगैरह ये सब चीज़ में। और ज़्यादातर जब, लाइक आई थिंक मैंने बोला था आपको कि फ्लिपकार्ट डेज में, बिग बिलियन डेज सेल्स में उतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि उस टाइम बहुत हैवी वर्कलोड रहता है। देर इज़ नो रूम, और आई वुड से देर इज़ नो स्पेस फॉर मिस्टेक, और नो स्पेस फॉर लेजीनेस। जहाँ टाइम बच सके हम लोग बचाते हैं। क्वेरीज बार बार लिख, नो डाउट क्वेरीज बार बार लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट वही लिखोगे, ह्यूमन एरर होगा, फिर इशू आएगा, एरर आएगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो इसीलिए ये सब चीज़ें उस टाइम बहुत ज़्यादा काम आता है, और उस टाइम ज़्यादा ही ये लोग शैडो चेकिंग करते हैं। सो दिस इज वेयर वी हैव यूज्ड इन रियल सिनेरियोज, ठीक है ना। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी, सब क्वेरी एंड जॉइंट्स कंबाइंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ। सब क्वेरी एंड जॉइंट्स का हम लोग किस में, लाइक सेवेंथ असाइनमेंट में हम लोग करते हैं। सेवेंथ या तो आई थिंक सिक्स्थ असाइनमेंट में हम लोग करते हैं ये सारे क्वेश्चन, सब क्वेरी एंड जॉइंट्स का, ठीक है। वी विल डू इट, नो वरीज फॉर दैट, वी विल डू इट। अगर आप लाइव स्ट्रीम में आए हो तो यू माइट हैव न्यू अबाउट द असाइनमेंट। तो अब चाहिए तो बोलो, मैं आपको असाइनमेंट का भेज देता हूँ, राइट। इफ़ यू वांट यू टेक द असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ यू वांट यू टेक द असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स टेक दिस। So this link, whatever link I have sent you, the assignment video, in this, मतलब इसमें क्या है, in this you have the Google Drive link where you have all those question, all the data set with create table and insert into, just copy and paste it in your SQL environment and use it, ठीक है। So these are the questions, and these questions are not, all the questions are not from my mind. It is like mixture of interview questions, questions from Reddit, LinkedIn, other interview series ka post questions and all, plus some challenging question which I have faced personally when I was working with the corporate sector, plus I was also working recently, plus I have worked with all those freelance client, ठीक है। So whatever question I thought कि yes, I can add it and it will create some value if you all people do this question, that all question I have added in this assignment. So please do it, and it is a good one, ठीक है, it is a good one, ठीक। Hey, hi Ashita, welcome to live stream. Welcome to live stream. Just a minute. Hi, welcome to live stream. New subscriber here. Yeah, thanks, bro. Thank you, Ashita. If you don't mind, kindly use English so I can follow. Yeah, sure. We will be using English language. मतलब Hindi plus English both. We will be using it, so it will be easy for you as well, easy for others. ठीक है. So Virat, okay, sir. Yeah, thank you, Virat. Thank you for asking question. Like anybody have any doubt related to SQL, Python for data analytics, you can ask. I can help you out. So by that time, let us move to the question that we have, that we are solving right now. That is phone number cleaning. Okay, let me. And no need to worry about. I will be giving all those notes. Where is the line? This. I yeah, I will be giving all those notes ka link in my YouTube post, so that you can check all the notes and whatever things I have written here, ठीक है, you will get all about it, ठीक। Virat sir speak in Hindi, that is easy to understandable, ठीक है। ओके, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लेट अस टॉक, दोनों में ही बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। वी विल टॉक इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट इट इज इजी फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, हिंदी व्यूअर्स एंड इंग्लिश व्यूअर्स, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, ताकि दोनों हिंदी और इंग्लिश व्यूअर्स को समझ में आए, ठीक है।
Okay, we have one query from Keshav. If you follow this guy, you will definitely grab the opportunity because he resolved every doubt. Yeah, thank you, Keshav. Thank you for that. Really, thank you for that. मतलब not every doubt, whatever idea I have in my mind, I can solve it from my own work experience and all. मेरा मतलब ये है कि जितने भी जितने कंपनीज के साथ मैंने काम किया है, जितने क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है, जितना आइडिया है उससे मैं आपको जितना हेल्प कर पाऊंगा आई कैन डू इट. अगर मेरे को आइडिया नहीं है देन आई वुड डायरेक्टली से कि आई डोंट हैव आइडिया इन दिस टॉपिक. ठीक है. आई मीन टू से इफ आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑन एनी टॉपिक देन आई वुड से कि ठीक है, आई डोंट हैव आइडिया ऑन दिस, प्लीज वी कैन कैरी फॉरवर्ड दैट थिंग टू समवन एल्स. ठीक है. Right. So anybody have any more doubts in the live stream? Any more doubts? Anybody have? And one more thing, let me tell you one thing ki it takes time to update the live chat here. So once I get the live chat in front of me, I will just answer it. मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभार लाइव चैट शो करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए जैसे ही लाइव चैट शो करेगा आई विल जस्ट आंसर इट. ठीक है. Okay, we have one more query from Ashita. How to know where to use a subquery in select statement, the from statement, or the where statement? First thing first, you use a subquery in select statement when you need a single calculated value for each row, like aggregated matrix. Aggregated matrix means this is the aggregated sum, count, average. ठीक है. So you will be using a subquery in select statement when whenever you need to find out a single calculated value for each row. ठीक है. Make sure you understand this for each row. ठीक है. That is the thing. And the second thing what you have asked from statement. You use subquery in from clause when you need a temporary table to join with other table. ठीक है. जैसे यू राइट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल ए. ठीक है. और यू कैन से लाइक वेट लेट मी राइट इट क्लियरली. एग्जांपल, सपोज यू राइट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम table A like this, normal query you write. So rather than writing this table 1, you will write select average of this from table A like this we write it from. ठीक है. We this is a subquery. ठीक है. Simple, this is a subquery. So we use a subquery in from clause when we need to we need a temporary table to join with other table. ठीक है. It is the thing. And where clause, right? This is the second thing. The first thing. थर्ड चीज क्या है? where clause. ठीक है. where clause. ठीक. Where clause when we want to filter the main query based on another query result. ठीक है. It is like select, kind of example I am saying, from T1 where you can say where suppose profit greater than select average of profit from like this, I mean to say. ठीक है. This is the third thing in where clause. I will repeat once again. You use a subquery in where clause when you want to filter the main query based on the another query result. ठीक है. ठीक. I hope you understood it. और हाँ, also let me tell this thing in Hindi as well. कहाँ गया? ओके. देखो, सिलेक्ट वाला सब क्वेरी तब यूज करते हैं जब हर रो के लिए एक कैलकुलेटेड
वैल्यू चाहिए हो, जैसे लुकअप हो या तो एग्रीगेट वैल्यू, उस टाइम एग्रीगेट वैल्यूज मतलब क्या होता है, सम, काउंट, एवरेज, ईच रो के लिए अगर कुछ चाहिए होता है तो हम लोग सिलेक्ट वाले में सब क्वेरीज यूज करते हैं, ठीक है। ठीक। सेकेंड चीज क्या है, फ्रॉम का क्वेरी, ठीक है। फ्रॉम क्लॉज में सब क्वेरी तब यूज होता है जब तुम्हें एक टेम्पररी टेबल बनाना हो जिसके बाद में ज्वाइन करना हो, जैसे कि इसमें सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस सब क्वेरी, ठीक। ये सब क्वेरी है। सब क्वेरी क्या होता है, एक टेबल, मतलब हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट के साथ और उसको हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम से, मतलब फ्रॉम दिस थिंग। थर्ड चीज इज वेयर क्लॉज, ठीक है। लेट मी जस्ट थोड़ा इसको, हाँ, वेयर क्लॉज क्या होता है, जब भी आपको कुछ फिल्टर वगैरह करना होता है ना, मतलब सब क्वेरी लगाते हैं जब मेन क्वेरी को फिल्टर करना होता है दूसरे क्वेरी के रिजल्ट के बेसिस पे, तब हम लोग सब क्वेरी लगाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट ग्रेटर देन एवरेज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम T1, ठीक है। इट इज अ थिंग। तो आई होप आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में, लाइक विराट एंड अशिता, आई होप आप दोनों को समझ में आया होगा। तो एनी मोर डाउट्स? ओके, वी हैव वन मोर डाउट फ्रॉम विराट, डेटा क्लीनिंग के लिए क्या क्या एनफ है। देखो, डेटा क्लीनिंग के लिए मोस्टली, लेट मी टेल यू, डेटा क्लीनिंग के लिए मोस्टली पहली बात ये समझो किस चीज के लिए डेटा क्लीनिंग मैक्सिमम रहता है। मैक्सिमम आपका ज्यादातर नेम के बीच में स्पेसेस रहेंगे और डेट्स का फॉर्मेट रहेगा, मतलब वेट, नेम इशू रहेगा। नेम इशू मतलब नॉट नेम का इशू बट स्पेसेस इंक्लूड रहते हैं नेम में, ठीक है। दूसरा चीज आपका डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप इशू कहाँ रहता है, लेट मी टेल यू दैट। अब क्या रहता है, डेटा हर जगह से आपके पास आता है और एक डेटा बेस में अपडेट होता है, ठीक है। एक डेटा बेस में अपडेट होता है आपका सीक्वल डेटा बेस में। कहाँ से आता है, मतलब एक्सेल से आएगा या तो SAP से आएगा या तो समझ जाओ आप टैली से आएगा, XYZ बोलूँ, ठीक है। या तो कभी ऑफलाइन चीज़ों से, जैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफर, जैसे मान लो रजिस्टर, रजिस्टर से उन्होंने अपडेट लिया और उसको फिर एक्सेल में डाला, फिर एक्सेल से आपको इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। इस तरीके से भी रहता है, हालांकि वो अब ओल्ड स्कूल हो गया, बट एनीवेज रहता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी डेटा इंपोर्ट होता है अपने डेटाबेस में या तो अपने डेटा पाइपलाइन में, तब कुछ डेटा टाइप्स का ये नहीं रहता है, मतलब व्हाट, डेटा टाइप्स का कुछ थ्योरी नहीं रहता है। कभी कभार क्या होता है, आपका जो नंबर्स है, मतलब सपोज क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो प्योर नंबर रहता है, ठीक है, जैसे 1 2 5 8, वो क्या रहेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। कभी कभार जो डेट रहते हैं वो कभी कभार क्या होते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहते हैं या तो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहते हैं, उसको डेट फॉर्मेट में हमें चेंज करना पड़ता है। कभी कभार इस तरीके का इशू होता है, जैसे हम लोग अपने इंडिया में कैसे लिखते हैं, पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ, फिर ईयर, ठीक है। लेकिन अब सपोज कोई फॉरेन कंट्रीज में कैसे लिखते हैं, लाइक ईयर, मंथ, डेट, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, कोई ऐसे लिखता है डेट 27 24, मतलब ईयर पूरा नहीं लिखता है, ठीक है। तो ये सब इस बेसिस पे जब रहेगा, वो सबको एक फॉर्मेट में हमें चेंज करना पड़ता है, जो कि अपना डिफॉल्ट फॉर्मेट है। जैसे क्या है, ईयर डैश मंथ डैश डेट, ठीक है। एक डिफॉल्ट फॉर्मेट में करने से क्या होता है, एंड रिपोर्ट या तो एंड काइंड ऑफ, आप जब रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हो अपने स्टेक होल्डर्स या अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आप लोग को ही इजी होता है कि सब जब एक फॉर्मेट में रहेगा तो आप इजीली उसका सॉल्यूशन या तो उसके रिक्वायरमेंट को कवर अप कर पाओगे इन अ पॉजिटिव वे। तो इसीलिए कभी भी डेटा जब आता है ना, मोस्टली रॉ डेटा रहता है और उसको क्लीन हमें करना पड़ता है विद लॉट्स ऑफ आई मीन राइटिंग क्वेरीज विच इंक्लूड रेगेक्स एक्सप्रेशन, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, जो ये रहता है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग एक एक सिचुएशंस, एक एक मतलब सिनेरियोस को कवर अप करते हैं, जैसे किसी में आपका क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट रहा, किसी में नंबर्स इंक्लूड रहा, किसी में डॉट रहा, किसी में प्लस,
इस तरीके से सिचुएशंस रहते हैं, हम लोग सिचुएशंस क्रिएट करते हैं एंड देन वी क्लीन इट। क्लीन अप कैसे होता है? रेगेक्स रिप्लेस करके ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। या तो आप ज़्यादातर देख लो केस व्हेन हम लोग लगाते हैं, मतलब इफ एल्स इन सीक्वल, केस व्हेन देन ये सब चीज़ लगाते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इस तरीके का काम करने से क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो क्लीन होता है, सिंपल। या तो आप देख लो इस तरीके का डेटा, देखो नेम में कैसे है, डेट्स में कैसे है, ठीक है। सैलरी देखो कैसे INR, किसी में पॉइंट है, किसी में कॉमा है, तो वो सब चीज़ों को हमें क्लीन करना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ डेटा क्लीनिंग वी डू इन रियल लाइफ सिनेरियो। मतलब दिस इज वेरी, मतलब just a kind of example I am showing. There are lots of things we have to clean during our raw data cleaning. So this is just a thing, just to showcase what kind of scenarios or what kind of day in life a data analyst faces on a daily basis or on a weekly or a monthly basis, like whenever the data is import or updated, okay? That is the thing. So in English, if I tell you in English what happens during data cleaning, let me tell you. In data cleaning, what happens? First thing first, the database is updated from different sources like Excel, SAP, Tally, registered to Excel, then database, all those things. So the data which we receive in our database is not on proper format. I mean to say, sometimes the quantity that is imported in our database is in string format or text format. Sometimes dates format is not properly maintained. See how it is like that. Sometimes dates format or data type is in text or virtual character format, so we have to change the data type to date, ठीक है। Then we have to change it to a default data type, like that. So like this kind of raw data scenario, we have to clean it and properly maintain it in our data pipeline, in our database, so that during our future use, or I would say during our future requirement, there won't be any issue at that time, okay? So how do we do data cleaning? Mostly we use regex expression, which you can find it here. There are lots of scenarios and things in the regex, like for alphabet A to Z, starting of the string, end of the string, or and date, I means digits, non-digits, like this kind of scenario. We make a case and then we solve it. How do we solve it? Mostly we replace the data, mostly we use if else kind of like case when then kind of thing. We use it and we clean the data to a proper format, okay? So this is the thing. So okay, we have two queries from Akshita. Yes, I understood it. Thank you very much. Yeah, welcome. Yeah, welcome. Okay, hi, welcome to live stream. Hi, welcome to live stream. Hi, keep up the great work. Recently, BCA graduate. What do I add in my CV if I have no experience before? Also, do data analyst, do feature engineer, or is it for data scientist? Say first thing first. No worries for that. If it is BCA or BTech or any domain, it is no issue in that. Okay. It was in a earlier stage ki when we used to see all the degrees and give job, but after COVID the situation has changed. After COVID it is all about skills, ठीक है। If you don't have any work ex, no need to worry about. Make sure whatever project you do, it should reflect your skill set. Skill set in what form? Your problem solving skill set, all those things it should reflect in that project. And also kind of storytelling work, storytelling skill set. Storytelling means storytelling in form of data analyst, ठीक है। This kind of skill set, if
it is reflecting in a positive way in the project that you have done, then there are chances like you might get a job role in a corporate sector. Not all corporate sector, but startup corporate sector, because startup company don't see about, mostly don't see about experience, don't see about your previous domains and all. What they see is all about your skills and your eagerness to learn new things. That's the thing. Okay? And eagerness to learn new things. So it is all about that. Okay? So just take care of your skill set, take care of your project, and start applying in startup companies. There are chances like you might get a job role in that corporate sector. Okay? That is what I have solution for you. And I have no, so also do DA do feature engineer, or is it for data scientists? DA, let me tell you, DA and DS, one thing is common in that. For DA we have SQL Python. For DS we have SQL Python, maths, and some knowledge of AI ML. ठीक है, that is only the difference, no doubt. SQL Python is common in all the scenario मतलब DE scenario also. SQL Python is common. If you want to go to DS, then maths and AI ML is must. But if you just want to work in your data analyst domain, then yeah, SQL Python is good to go. And just to stay ahead, learn one BI tool, just basics part, learn one basics part of BI tool. It is good to go. ठीक है, that is the thing. So I hope you got the solution for that. So by that time, anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts. I can help you out in that. ठीक है. Hmm. Anybody have any more doubts in the live stream? Just a minute. Okay, we have one query from Virat. Customer who orders same day, customer who orders specific product, customer who order in each month. इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? ओके, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन का मेन लॉजिक या तो मेन कॉन्सेप्ट आपका ग्रुप बाय में रहता है ज़्यादातर. आप ज़्यादातर ग्रुप बाय यूज़ करोगे. कहाँ यूज़ करोगे बता दूंगा. ग्रुप बाय यूज़ करोगे और कैलेंडर ज़्यादातर यूज़ करोगे. कैलेंडर मतलब नॉट प्रॉपर कैलेंडर, इट इज़ ऑल अबाउट डेट्स. ठीक है, यू विल बी यूजिंग दिस टू थिंग्स मोस्टली. ठीक है, अगर जैसे आपने बोला कि कस्टमर ने सेम डे ऑर्डर किया है, तो डेट पर फिल्टर या ग्रुप बाय कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट करके काउंट चेक कर सकते हो, क्योंकि सेम डे क्या आपने बोला है. ठीक है, सिंपल. फिल्टर किस तरीके से आप क्या करोगे, वेर में फिल्टर अप्लाई करोगे. जैसे कि वेर जो भी आपका परचेज डेट या तो ऑर्डर डेट, जो भी डेट होगा वो दे देना, कौन सा डेट आपको चाहिए. ठीक है, दैट इज द थिंग. नाउ सेकेंड चीज आपने क्या पूछा, कस्टमर हु ऑर्डर स्पेसिफिक प्रोडक्ट. तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाले केस में बस प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट नेम पर फिल्टर लगाना होता है. ठीक है, दैट इज द थिंग.
मतलब क्या है स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मतलब देखो जैसे आपने स्पेसिफिक डेट के लिए वेयर में डेट्स दिया, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आप क्या दोगे, स्पेसिफिक या तो प्रोडक्ट नेम दोगे आप, या तो प्रोडक्ट आईडी दोगे, या तो SKU आईडी होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी आईडी होता है वो सब आप देते हो, सिंपल। बस वो फिल्टर में रहता है। दिस इज फॉर डेट फिल्टरेशन। सेकेंड थिंग आपका हो गया प्रोडक्ट फिल्टरेशन में, ठीक है। और थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज आपने क्या पूछा है, कस्टमर हु ऑर्डर ईच मंथ, इस टाइप के क्वेश्चन, कस्टमर हु ऑर्डर ईच मंथ। तो ईच मंथ ऑर्डर फाइंड करने के लिए कस्टमर को मंथ के हिसाब से ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर को मंथ के हिसाब से, राइट। मतलब इसमें क्या रहता है कि हर महीने किस कस्टमर ने ऑर्डर किया वो रहता है। किस टाइप से बोलूं, जैसे कि ओके, हाँ, ऐसे कर सकते हो। जैसे आप ग्रुप बाय में सिंपली आप, जैसे मैं बोला, कौन सा लिखे हो आप, हर मंथ। तो मंथ के लिए जैसे पोस्ट ग्रे सीक्वल में रहता है एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम द डेट कॉलम, ठीक है। इसको आप ग्रुप बाय करोगे। और हाँ, अगर आप ग्रुप बाय इसको कर रहे हो, नो डाउट आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट में कस्टमर आईडी भी होगा, क्योंकि आपने क्या बोला, मंथ के बेसिस पे कस्टमर आपको फाइंड आउट करना है। तो कस्टमर आईडी या कस्टमर नेम भी ग्रुप बाय में रहेगा, सिंपल एज दैट। ऐसे चेक कर सकते हो कि कितने मंथ पे ऑर्डर किया है एंड ऑल दोस थिंग्स। मतलब इसमें आपको क्या आउटपुट में दिखाएगा, अगर मैं आपको बोलूं सिंपल वर्ड में, इसमें आपको आउटपुट में दिखाएगा कौन सा कस्टमर हर मंथ प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज आपने मार्च, मतलब हर महीने, सपोज मार्च 2025, क्योंकि आपने ग्रुप बाय किया। ग्रुप बाय क्या होता है, आपका फिल्टर वे में चलता है। मार्च का एक फिल्टर बना देगा, ठीक है। अप्रैल का एक फिल्टर बना देगा, अप्रैल 25। तो इसमें दिखाएगा अगर मार्च में सपोज कस्टमर आईडी 1026 ऑर्डर किया, और अगर अप्रैल में कस्टमर आईडी 1026 रहा, तो आप बोल सकते हो कि हाँ चलो, मार्च और अप्रैल दोनों में कंटिन्यूसली कस्टमर आईडी 1026 ने कुछ ऑर्डर किया। सपोज मई में क्या हुआ, कस्टमर आईडी, दो कस्टमर आईडी थे 1025, फिर मई में आएगा 1026। तो आप बोल सकते हो कि चलो मई में दो कस्टमर्स आए, 1026 आवर कंटिन्यूअस लॉयल कस्टमर, और 1025 आवर न्यू कस्टमर विद अ सिंगल ऑर्डर। इस तरीके से जब आप ग्रुप बाय करोगे, क्या होगा, हर महीने का आपका एक फिल्टर आउट हो जाएगा, और उस फिल्टर के साथ जैसे कस्टमर आईडी भी आपने ग्रुप बाय किया, तो कस्टमर आईडीज भी शोकेस कर देगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। वो बात है। Okay, we have one more question from Virat. How to learn statistics from data analyst, मतलब for data analyst using Power BI. भाई statistics, let me tell you, ज़्यादातर आपका पाइथन में यूज़ होता है, let me tell you that। अच्छा, एंड लेट मी सेंड यू सम प्रोजेक्ट एज वेल। आप अगर इस प्रोजेक्ट में जाके देखोगे रिलेटेड टू दिस, जो भी प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ आपको, आप ये प्रोजेक्ट अपने CV रेज्यूमे या तो लिंक्डइन में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे क्या है, एक्चुअल प्रोजेक्ट है जो मतलब इंस्पायर्ड फ्रॉम माय फ्रीलांस क्लाइंट। मतलब हम लोग इसमें रॉ डेटा क्लीनिंग, रॉ डेटा मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन, प्लेस होल्डर, ये सारे चीज़ें दिए हुए हैं। तो आप पूरा एक स्टेप बाय स्टेप, वो बोलते हैं ना वर्क फ्लो, वो वर्क फ्लो में आप चलोगे कि कैसे रॉ डेटा आपने इंपोर्ट किया, कैसे उसको चेक किया, एक्सप्लोर किया, देन आपने क्लीन किया डेटा, फिर आपने मेल बैक किया कि क्या प्लेस होल्डर देना है, पूरा मेल आईडी, आई मीन मेल स्टेटमेंट, स्टोरी टेलिंग, सब कुछ ये सब प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। तो आपको एक आइडिया रह जाएगा कि ऑन अ डेली बेसिस कैसे काम करते हैं एक डेटा एनालिस्ट, ठीक है। हाँ, बट द थिंग इज कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सारे फ्रीलांस पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब फ्रीलांस क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक फ्रीलांस क्लाइंट काम करता है ऑन दोज प्रोजेक्ट यूजिंग ऑल दोज टूल्स।
तो हमने सीक्वल, पाइथन, पाइथन विजुअलाइजेशन, एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स, पावर बीआई, ये सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं टिल डेट, और हर महीने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आता रहता है। ठीक है, हर महीने कुछ ना कुछ हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं। तो इस बार का जो पावर बीआई प्रोजेक्ट है वो हेल्थ केयर सेक्टर से था, वो भी आप देखना। और अपने सीवी, रेज्यूमे, लिंक्डइन में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे लिंक है, प्लस मेरे लाइक इस लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। आप चाहो तो बाद में यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, या तो मेरे चैनल में भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, राइट। दिस आर द थिंग्स। और बाकी अगर कुछ लिंक्डइन, मतलब लिंक्डइन बोल रहा हूँ, टेलीग्राम वगैरह यूज़ करते हो तो यू कैन जॉइन आवर ग्रुप। ठीक है, वहाँ पे कुछ डाउट्स वगैरह हो तो यू कैन आस्क। और ये तो अपना इंस्टा आईडी है, बट उतना एक्टिव नहीं रहता मैं इंस्टा में। ओके, वी हैव वन क्वेरी फ्रॉम स्टैन। क्या है? आई एम फ्लुएंट इन एम एल, स्टैट्स एंड मैथ्स फॉर नाउ। तो अच्छा यार, एम एल, स्टैट्स, which comes under maths, that's a good thing. For now I am just applying for DA roles. See, for DA roles make sure you are having good grip in SQL and Python. ठीक है, Python not all the things, Python, see Python is used in all platform, all domains। platform domain मतलब कि in web development, in software development, XYZ, everywhere। Also Python used in data analytics। So you have to learn Python only for data analytics point of view, means only libraries you will be using and you will be learning. So whatever project I have given, it is on data analytics point of view only, like the Python project, SQL project. You can go and check that out, and at least you will be knowing like what kind of work you have to do during your corporate work or your freelance work. Okay, so please go and check that out. It will be really helpful for you. And please give me feedback as well, because I am new to YouTube, so I am also on a learning stage. And thank you for your time. Yeah, welcome, bro. Welcome, welcome. So anybody have any more doubts in the live stream? I can help them out. ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में, आई कैन हेल्प देम आउट। ठीक है, एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, जस्ट आस्क योर डाउट्स। सो ओके, किसी को कुछ डाउट फिलहाल के लिए लाइव स्ट्रीम में? Okay, we have one query from Stan. My strong domain is Python, Excel, and Power BI. That's a good thing then. You are almost have knowledge about the main three things. ठीक है, I mean to say 80, not 80, I would say 70% of work is done already. So I do know SQL, but not much interested in SQL. Okay, no worries, but let me tell you one thing. SQL is today's Excel. ठीक है, means today's Excel is SQL, and SQL is much more easier. If you think like if you have done Python, then let me tell you one thing, SQL is just, I would say, cakewalk for you. ठीक है, let me tell you that, because everyone including me used to have a lot of problem when we are learning Python, and especially this Power BI ka DAX wala system. We used to face a lot of problem, let me tell you. But for SQL, it was easy for us. And if you have completed all those things properly, like you have told, you have having a good grip on this tools and all on this topic, so SQL will be really a cakewalk for you, believe me. So no need to worry about that, and trust me, it will be really easy for you. Trust me, it is not that tough, let me tell you that. So anybody have any more doubts in the live stream? Anybody have any more doubts? I hope everything is okay. Yeah, चलो ठीक है।
Okay, we have one query from Virat. एक minute. Okay, Power BI is what I can see. When in Power BI resource file location change, then file is corrupted. How to solve it? Obviously, देखो वो तो रहेगा ही। उसका क्या सेम मतलब सॉल्यूशन क्या है? पावर बीआई डेस्कटॉप बता रहा हूँ, पावर बीआई डेस्कटॉप में जाओ, प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा, तो एडिटर में चले जाओगे, ट्रांसफॉर्म डेटा आपको रिबन में मिल जाएगा, सिंपल। उसके बाद डेटा, उसमें आना क्या बोलते हैं, डेटा सोर्स का सेटिंग, ठीक है। उसके बाद आपको सोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट द सोर्स, सिंपल एज दैट, सिलेक्ट द सोर्स। उसके बाद आपको चेंज, आई थिंक चेंज सोर्स करके है, चेंज सोर्स में क्लिक करके उसका जो फाइल पाथ है वो देना पड़ेगा, जो फाइल पाथ है न्यू वाला फाइल पाथ वो देना पड़ेगा। बट उससे पहले हाँ, चेंज सोर्स में शायद क्लिक करना है, आई थिंक चेंज सोर्स का ऑप्शन है वहाँ पे, आई थिंक सो। ये वाला एक बार देख लेना, ये वाला चीज़ मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ ये है कि नहीं। बट हाँ, फाइल पाथ उसके बाद मिल जाएगा, मतलब सिलेक्ट द सोर्स, देन आपको फाइल पाथ देना पड़ेगा। जैसे ही आप करेक्ट पाथ अपडेट करोगे ना, पावर बीआई ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। नहीं भी हुआ रिफ्रेश तो ऑटोमेटिक आप रिफ्रेश, आई मीन मैनुअली आप रिफ्रेश कर देना, तो फिर से ठीक रीड करेगा, और जो एरर आता है करप्शन एरर वो भी चले जाएगा, ठीक है, राइट। आई होप यू गॉट द आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस। So anybody have any doubts in the live stream related to anything, they can ask your doubts. Anybody have any doubts in the live stream? Anybody have any doubt? कल फर्स्ट वीक खत्म हो जाएगा दिसंबर का, ओनली लास्ट कितना वीक्स, लास्ट आई थिंक 4 वीक्स और बचेगा, उसके बाद फिर न्यू ईयर आ जाएगा, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो ओके, बाय दैट टाइम एनीबॉडी हैव एनी डाउट, या तो फिर हम लोग चलते हैं उसमें। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी फ्रॉम विराट। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे, आई मीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो सीक्वल के? हाँ, क्वेश्चन हम लोग हर दिन मेनली क्या होता है, लाइव स्ट्रीम जो है, जो हर दिन लाइव स्ट्रीम करते हैं उसमें हम लोग मोस्टली डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, जो असाइनमेंट मैंने दिया है वो असाइनमेंट के हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। माय मेन मोटिव इज एटलीस्ट रोज कुछ ना कुछ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, और आपका टच हटना नहीं चाहिए। जो भी टूल्स में आप एक्सपर्टीज बन रहे हो, जैसे कि सीक्वल हो या पाइथन हो, पाइथन का जब 2000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, मैं पाइथन का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है मैंने 1000 सब्सक्राइबर में लेके आया था अपने यूट्यूब चैनल के लिए, यूट्यूब व्यूअर्स के लिए। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं पाइथन के लिए भी लेके आऊँगा 2000 सब्सक्राइबर्स में। हम लोग पाइथन के भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, और सब रहेगा, डेटा क्लीनिंग रहेगा, और मोस्टली जितने भी, जितना हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शंस यूज कर सकते हैं हम लोग करेंगे, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हाँ, हम लोग असाइनमेंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और डाउट्स भी क्लियर आउट करते हैं, ठीक है। इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ, राइट। हाँ, कभी कभार ऐसे होता है, अगर क्लाइंट का काम आज देखो, जैसे क्या हुआ आज, फिर से क्लाउड फ्लेयर का इशू आ गया। अब पता नहीं क्या ये मेंटेनेंस इशू कुछ चल रहा है, भगवान जाने क्या हो रहा है। आज फिर से क्लाउड फ्लेयर का इशू आ गया, जिसके कारण मुझे आज लेट लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना पड़ा, नहीं तो अराउंड 6
6:30 हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने अपना जो वर्क वाला जो लाइव स्ट्रीम है वो स्टार्ट कर दिया, एटलीस्ट आप लोगों का डाउट पार्शियली क्लियर कर सकूं। आज अगर आप लोग न्यूज़ देखोगे, पता नहीं कितने लोगों को पता चला होगा, लास्ट टाइम तो हैवी वाला हुआ था, इस बार फिर से कुछ मेंटेनेंस के कारण ये सारा फिर से इशू आ गया क्लाउड फ्लेयर में, तो उसके कारण थोड़ा लेट हो गया आज। एंड रहता है, अब क्या कर सकते हैं, देखो टेक्निकल चीज़ें, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, अपने हाथ में नहीं है। तो कुछ कुछ सिनेरियोस में क्या है, वी डू अ लिटिल बिट ऑफ डिले। कुछ कभी कभार क्या रहता है, ज़्यादा काम हो जाता है, जैसे अभी पावर बीआई का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा था, तो उस टाइम थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया था, तो लाइव स्ट्रीम उतना नहीं हो पा रहा था, बट स्टिल जितना हो सके। और हाँ, मेरा मेल आईडी भी आपके पास मैं भेज देता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, ठीक है। तो फिर भी इनकेस अगर आपको कुछ डाउट रहता है आफ्टर द लाइव स्ट्रीम, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, मैं आपको मेल बैक करूँगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है, हाँ, बट मेल बैक एक्सपेक्ट करना कि आप सैटरडे और संडे तक मेल बैक करूँ, ठीक है। क्योंकि जब मेरे को फ्री टाइम, थोड़ा सा फ्री टाइम सैटरडे और संडे ही मिलता है, तो मैं मेल बैक कर देता हूँ, बट नो नीड टू वरी अबाउट, मैं मेल बैक करूँगा, इसका ये गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ माई गारंटी, एंड आई हैव डन रिप्लाई ऑफ मोस्ट ऑफ द मेल्स दैट आई रिसीव। बट हाँ, ये दिन में मैं ज़्यादातर आई क्लियर आउट ऑल दोस मेल्स, ठीक है। कुछ भी डाउट्स, और मेल आईडी क्यों है वो भी बता देता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह, एरर वगैरह आता है, तो एरर का स्क्रीनशॉट वगैरह लेके यू कैन अटैच इन मेल और सेंड इट, आई विल हेल्प इट आउट, ठीक है। ओके, तो आप लोग कहाँ गया, या आप लोग डाउट्स वगैरह कंटिन्यू करो, ठीक है। बाय दैट टाइम हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। कौन कहाँ गया, फोन, हाँ, फोन रॉ, मतलब रॉ डेटा, आई मीन टू से, इसको हम लोग कैसे क्लीन करेंगे वो देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको जस्ट अ मिनट, ठीक है, मैं जस्ट ऐसे लिख देता हूँ। और देखो, अब मैंने क्या कहा, डेटा क्लीनिंग में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर रेगेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, रेगेक्स। अब मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है, ऑब्वियसली हर डेटा एनालिस्ट का कुछ थॉट प्रोसेस रहता है, नॉट ओनली डेटा एनालिस्ट, यह कहना गलत होगा कि ओनली डेटा एनालिस्ट का, जो भी टेक्निकल फील्ड में आप जाते हो, इवन तो नॉन टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, आप कुछ भी काम करते हो, कुछ भी काम, एक्स वाई जेड वर्क, सब में एक आपका थॉट प्रोसेस रहता है, ठीक है। सब में एक थॉट प्रोसेस रहता है, मतलब थॉट प्रोसेस इन द सेंस किस तरीके से, कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। एक वे रहेगा, राइट, एक वे रहता है, ऑब्वियसली सबका एक वे रहता है कि किस तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कि पहले मैं इधर ये करूंगा, दूसरा दिस थिंग, तीसरा दिस थिंग। अब ऐसा नहीं है ना कि पहला आई विल डू दिस, देन थर्ड दिस, देन सेकंड, ठीक, इट इज नॉट लाइक दैट, देयर इज अ थॉट प्रोसेस, देयर इज अ वे टू सॉल्व आउट अ प्रॉब्लम। तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है इससे रिलेटेड, कि अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, दिस नंबर, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे नंबर, अपना ये नंबर है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, मैं क्या करना चाहता हूँ, जितने भी ये सारे चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग स्पेस वगैरह, जो भी चीज़ें, उनको मैं रिप्लेस करूँगा एम्प्टी स्ट्रिंग में। किस में, एम्प्टी स्ट्रिंग में रिप्लेस कर दूंगा। तो अगर ये सारी चीज़ें मैं रिप्लेस कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग में, तो क्या दिखाएगा, 9198765431, ठीक है। अब ये प्रॉपर दिख रहा है, राइट, कुछ प्लस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। सो मेरा वो थॉट प्रोसेस है, मैं क्या करूँगा, कि जितने भी यहाँ पे अनवांटेड चीज़ें, लाइक प्लस, दिस डैश, स्पेस, ठीक, वो सारे चीज़ों को मैं रिप्लेस कर दूंगा विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और हालांकि मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग ऑफ द, आई मीन लाइव स्ट्रीम में, क्या कहा था कि हम लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं,
रिप्लेस, ठीक है। और हाँ, और एक बात बता देता हूँ, ये जो रेगेक्स एक्सप्रेशन है मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन है, आप सीक्वल पाइथन दोनों में यूज कर सकते हो, दैट इज द थिंग। तो मैं क्या करूंगा, रेगेक्स पी में जाके मैं बोलूंगा कि जो नॉन डिजिट है, मैचिंग एनीथिंग अदर देन डेसिमल और डिजिट, रिप्लेस इट विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतने सारे चीजें याद कैसे करना है, आपको कुछ याद नहीं करना है इसमें से, इसका वेबसाइट है, यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक दैट आउट। हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस में क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द कॉमन चीजें हैं जैसे स्लैश स्मॉल डी फॉर डिजिट, स्लैश कैपिटल डी फॉर नॉन डिजिट, फिर ए टू जेड फॉर कैरेक्टर, फिर करली ब्रैकेट में द नंबर, एनीथिंग आफ्टर दैट आप करली ब्रैकेट दोगे विद अ नंबर, सो कंटिन्यूएशन ऑफ दैट थिंग, इस तरीके की चीजें आपके माइंड में ऑलरेडी सेट हो जाएंगे ऑन अ रेगुलर प्रैक्टिस, राइट। अब देखो, आप एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जब मोबाइल चलाते हो, जब नया नया मोबाइल चलाए होगे, तब आपको मे भी शायद आइडिया ना हो कि ये क्या बोलते हैं, सेटिंग्स कहाँ पे आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली यू गो टू द, कहाँ गया, आपको अगर सेटिंग्स में जाना रहता है मोबाइल फोन्स में, एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो व्हाट यू डू, यू गो टू मेन्यू, देन यू गो टू सेटिंग्स एंड डू योर वर्क। अभी क्या होता है, जब आप रेगुलर यूज करते हो रहते हो मोबाइल रेगुलर यूज, तो आप क्या देखते हो कि आप जब नोटिफिकेशन वाला ड्रॉअर, जो नोटिफिकेशन ड्रॉअर है, वो जब आप नीचे करते हो, यहाँ पे सेटिंग बटन रहता है, ठीक है। तो व्हेन यू यूज रेगुलरली एनी टूल, कोई भी टूल, आप सीक्वल ले लो, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, कुछ भी टूल ले लो, आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना, आपको उतना, आपका ब्रेन उतना ज़्यादा इस चीज़ में फोकस रहेगा कि इसका इजी सोल्यूशन कैसे निकाले, राइट। हालांकि आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, एंड आई नो इट इज़ अ बोरिंग थिंग, क्योंकि कोई भी पढ़ाई लिखाई का चीज़ इज एक्चुअली बोरिंग। तो वही बोल रहा हूँ, देखो आप जितना मोबाइल यूज़ करोगे, आप पहले क्या करते थे, मेन्यू में जाते थे, देन सेटिंग्स में क्लिक करते थे। राइट नाउ, आफ्टर रेगुलर यूज, व्हाट यू नो कि नोटिफिकेशन डाउन करूंगा तो आई विल गेट अ सेटिंग का ऑप्शन देयर, आई थिंक आईफोन में है कि नहीं, आई डोंट नो, एंड्रॉयड में तो रहता है आज तक भी, अब न्यू अपडेट तक में भी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप जितना यूज करोगे रेगेक्स वाले, आई मीन रेगुलर एक्सप्रेशन की चीजें, वो उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, you will find new ways, you will build new patterns for replace, for this regex p replace, या तो for changing any raw data to a clean data, ठीक है। हाँ, तो हम लोग चलते हैं, थॉट प्रोसेस क्या था, मैं क्या करूंगा, जितने भी नॉन डिजिट्स हैं उनको, जितने भी नॉन डिजिट्स हैं, मैं क्या करूंगा, जितने नॉन डिजिट्स हैं उनको मैं चेंज करूंगा, रिप्लेस करूंगा विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक। एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट, ठीक। अब उसको, अब हमने तो इसमें नोट पैड में देख लिया, अब इसको हम लोग देखेंगे इधर, आई मीन टू से ये सीक्वल इन्वायरमेंट पे, ठीक है, सिंपल एज दैट, रेगेक्स पी रिप्लेस, उसके बाद आपको कॉलम का नाम लिखना है, कौन से कॉलम पे आप चेंज करोगे। कॉलम का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है कि क्या चेंज, आई मीन क्या चीजें सीक्वल को देखनी पड़ेगी, सीक्वल को चेक करना है, ओ सॉरी, सीक्वल को चेक करना है, एनी नॉन डिजिट डेटा, उसको किस चीज में रिप्लेस करोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग में। फिर आपको देना है यहाँ पे ग्लोबल, ग्लोबल का क्या यूज है वो मैं बता देता हूँ। ग्लोबल का मतलब कहाँ गया यार, फ्लैग्स में, हाँ। ग्लोबल का मतलब क्या है, ग्लोबल मोड का मतलब क्या है, कि हर डिटेल्स को चेक करते रहो जब तक एंड डेटा तक सीक्वल पहुंच ना जाए, मतलब सीक्वल क्या करेगा, हर चीज चेक करेगा, इसमें मैं आपको शोकेस करता हूँ। पहले प्लस में जाएगा, उसको स्ट्रिंग क्रिएट करे, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग करेगा, फिर 9 में जाएगा, देखेगा डिजिट है, ओके। 1 में जाएगा डिजिट, ओके, फिर देखेगा डैश, डैश क्या है, नॉन डिजिट, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग करेगा। तो वो क्या रहता है, ग्लोबल मोड में हर एक एक नंबर पे जाता है टिल द एंड, मतलब एंड में स्पेस है उसको भी हटाएगा, फिर उसका देखेगा और कुछ है क्या, नहीं है, तो इट विल क्लोज द ऑपरेशन देन एंड देयर। तो इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल जी विच इज दिस ग्लोबल एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, ठीक है।
इवन दो आप कुछ भी क्लिक करोगे आपको डिटेल इसमें मिल जाएगा अबाउट वट एवर रेगेक्स एक्सप्रेशन यू वांट, यू आर यूजिंग, आपको उसका डिटेल मिल जाएगा जब आप क्लिक करोगे, ठीक है। नहीं तो गूगल तो है ही अपने पास, अगर कुछ डिटेल नहीं रहता, कुछ समझना रहता तो गूगल है, यू विल गेट मच मोर एक्सप्लेनेशन इन दैट, गूगल, यूट्यूब, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे कि रेगेक्स रिप्लेस जो कॉलम है with non-digits with empty string and it should be on global mode as क्या लिखना है, clean phone data। चलो एक बार देखते हैं कि is it working। अब क्या हो गया, वेट, सॉरी। अब देखो, अब देखो प्रॉपरली कैसे आपको शोकेस कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेट मी जस्ट यहाँ पे शोकेस करता हूँ। अब यहाँ देखो कितना प्रॉपरली यहाँ पे सेट हुआ है हर चीज़, कहीं पे कुछ स्पेस नहीं है, कहीं पे कुछ इश्यूज नहीं है, हर चीज़ प्रॉपरली सेट है, ठीक है। कहीं पे कुछ प्लस नहीं है, कहीं पे कुछ माइनस वगैरह नहीं है, एवरीथिंग इज प्रॉपरली सेट। तो वही बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो स्पेस है वो हट गया कि नहीं, यहाँ पे जो स्पेस था वो यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज रेगेक्स, आई मीन रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगेक्स। दिस इज द थिंग, हम लोग एक पैटर्न फॉर्म किए, क्या पैटर्न फॉर्म किए कि जो नॉन डिजिट्स हैं उसको एम्प्टी स्ट्रिंग में कर दो, तो जो भी आउटपुट रहेगा वो मुझे दो। वी आर टेलिंग SQL like that। तो SQL does the work for us and that's all about it, right। तो किसी को कुछ डाउट फिलहाल के लिए लाइव स्ट्रीम में, दे कैन आस्क योर डाउट्स इन द लाइव स्ट्रीम। किसी को कुछ डाउट लाइव स्ट्रीम में आप लोग पूछ सकते हो, लाइव स्ट्रीम में आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट। लाइक एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स इन द लाइव स्ट्रीम, दे कैन आस्क योर डाउट्स, राइट। किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में आप लोग पूछ सकते हो, you can ask your doubts in the live stream, I am ready to help you out in that। किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द लाइव स्ट्रीम, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट इन दैट। कोई भी मतलब सीक्वल या तो पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स, कुछ भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। Anybody have any doubts in the live stream, they can ask your doubts in the live stream, I am ready to help you out in that, right। Anybody have any doubts in the live stream। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ रेस्पॉन्स मिलेगा क्या। हाँ, रेस्पॉन्स अगर बाकी लोग कोई रेस्पॉन्स देता है तो ठीक है, अगर मैं ऑन स्पॉट देख लेता हूँ वो डाउट्स रिलेटेड तो मैं रेस्पॉन्स दे दूंगा, ठीक है। ज़्यादा अगर आपको फास्ट रेस्पॉन्स या फास्ट चाहिए तो भाई ईमेल इज़ बेटर, बट स्टिल टेलीग्राम ग्रुप में लोग हैं अपने, अपने व्यूअर्स हैं, अपने सब्सक्राइबर्स हैं, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट इन दैट, ठीक। तो उस पर आप ज्वाइन करके डाउट पूछ सकते हो, दे विल हेल्प यू आउट इन दैट एज वेल, ठीक है। यू कैन आस्क योर डाउट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते, बट मेल में क्या है, आई कैन पर्सनली हेल्प यू आउट, और मेल आपको रिप्लाई मिलेगा नो मैटर वॉट। हाँ, नो डाउट सैटरडे संडे रिप्लाई करता हूँ, बट स्टिल नो मैटर वॉट आई विल रिप्लाई यू इन मेल, ठीक है, नो मैटर वॉट। ओके, सो एनीबडी हैव एनी डाउट इन द लाइव स्ट्रीम।
They can ask your doubts here. Anybody have any doubts in the live stream? They can ask your doubts. किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में, they can ask your doubts in the live stream. Anybody have any doubts in the live stream? I can help you out in that. Anybody have any doubts in the live stream? You can ask your doubts. Anybody have any doubts in the live stream? आप लोग पूछ सकते हो लाइव स्ट्रीम में. I can help you out in this. Right. Anybody have any doubts in the live stream? Just a minute. Yeah, it's okay right now. Okay, hey, hi Shiv, welcome to live stream. Welcome to live stream. Okay, we have one query. I am a fresher. Which topic I want to cover for data analytics role? For data analytics role, I would say fresher, na? Simple, start with all those queries and all, like select from where having aggregate function. ठीक है, these are the things, these are the basics things. First thing first, you have to take care of that, where having aggregate functions, all those things. ठीक है, after that move to joins, group by, anything we left, joins, group by, mostly joins and group by, what things you will take care of in joins, mostly left join, inner join, self join, or full outer join. All those things you have to take care of. ठीक है, this is intermediate part I am saying. Basics तो it is like where having aggregate functions, aggregate मतलब sum, count, min, max, xyz. ठीक है. Joins, group by, intermediate. After that in intermediate only you have to take care of subqueries. ठीक है, subquery you have to take care of. फिर how to use subquery in what scenarios, what output you will get. Like today I have received a good question from one of our viewer, Ashita करके, Ashita, and good question, like related to where we use subquery and what output do we get when we use subquery in select, when we use subquery in from, when we use subquery in where. ठीक है, like this kind of questions and scenario you cover up in subquery. No doubt subquery is a very small topic, but still interview point of view take care of this.
Now comes the advanced part, advanced section. Advanced section, what we have? CTE, ठीक है? Then we have Windows function. Then we have union, also union all, like this kind of thing. ठीक? And also in Windows function, what things you have to take care of? Windows function you have to take care of the ranking part, जैसे कि rank, dense rank, ठीक है? Row number, most important, row number. And also in Windows function related to like some max, min, like this kind of things. This is the first thing. Second comes the preceding and following, ठीक है? Preceding, following, how do we use it, all those things you have to take care of that as well. So this is what we need to work on in SQL point of view, okay? I hope I covered all those sections, all those main sections, I hope so, okay? That is the thing for SQL. Then make sure as a fresher how you will showcase your skills. Make sure you take care of good quality project. Good quality project means related to projects should include like data cleaning, modification work, like this kind of thing, manipulation work, like this kind of thing you should take care of. Then it should also include like business problem solving, ठीक है? Business problem solving kind of scenarios should be taken care of in the project, and that's the thing for SQL. Then goes for Python, because these are the two main tools you will be using in any field related to DA role, related to data engineering role, related to data science role. Data engineering and data science role contains lots of other tools as well, but these are the common, I would say, bread and butter for data domain. Python, not all those things. Python for data analytics, no doubt. Python is used for, I mean, web development on your this software development XYZ kind of thing. But for data analytics, you have to use it. Okay? Data analytics users are mostly dependent on libraries. Okay? Pandas, NumPy, Matplotlib, like this kind of scenarios. Okay? I mean, like this kind of libraries. So make sure you take care of Python with those libraries as well. And what topics you have to learn? There are lots and lots of function in each and every libraries. Make sure you take a topic, or I would say not a topic, sorry, take a tutorial and work on the project what they have taught you related to that. Okay? Because it is very much tough to understand any functions in Python on a theory or a practical basis, but when you do the same function in a project, it will be very easy for you to understand, because you will be knowing like why are we using those functions. When you use the functions, or when you learn the functions in just a normal way, normal learning way, it will create a scenario in your mind like why do we use it, where do we use it, all those stuffs. So when you start using the function in project point of view, it would be very much creating a kind of story in your mind कि अच्छा, in this scenario I will use this function, in this scenario I will use this and this function, like this kind of thing. ठीक है? Same, do good quality project, domain wise project in SQL and Python. ठीक है? Then comes any of the BI tool, any BI tool you can learn, not all those parts, not full deep dive wala, not learning in that, only basics to intermediate part.
is more than enough. Intermediate part is more than enough to learn in BI point of view. I mean, in BI tools point of view, because as of now, most of the companies are having their own BI developer team who are taking care of that. But you told you are into data analytics, but at least in today's competitive world, make sure you have a basic to intermediate knowledge in any of the BI tool. Any BI tool मतलब पावर BI और Tableau. ठीक है, both are industry standard, both are used. I mean to say, like, neck to neck competition is there. It is not like all the companies use Power BI, all the companies use Tableau. It is not like that. In Amazon, in Flipkart, what I have seen, Power BI, Tableau is both are used and both are given much more importance than any other thing in BI tools, let me tell you. So that is the thing, and this is the roadmap for learning uh, tools in data analytics point of view. And as you told, you are new here, so it is better to see this project what I have made for you people, and you can use this project in your CV and resume. And at least you can see like how a data analytics or a data and I mean data analyst work in freelance point of view, like how a data analyst receive file, ask for the placeholder, email communication, storytelling, each and everything is there from my own experience. Whatever experience I have as per client handling and as per stakeholder handling in corporate and freelance world, I have used all those topics in this project. So please use it, see it, see the project, learn how things are going on behind the scenes. As a I mean as a data analyst day in life, you will be able to understand like what is the workflow, how things goes on, what are the challenges, all those things. Okay, and also you can use this project in your CV and resume or in your LinkedIn platform as well, so no worries for that. Okay, so by that time, anybody have any doubts in the live stream? Okay, so right now let's move to this thing. Is active yes or no? What is that? Okay, let's see what is it all about. Question number 7. ठीक है, let's select everything from raw sorry, raw customers. Let's see what is it all about. Let's check once. By that time, anybody have any doubt, they can message me here. ठीक है, it is not like yeah, I'm doing question, you should not message your doubts, whatever doubts you have, just message it, I will help you out in that. So what was all about? Yes or no? Acha, like this, is active yes or no? ठीक है. So in that, what we have to do is like where there is yes, why one, it will be yes on this also, and where there is no, zero, n and false, it will be kind of no. What I can see in this. Okay, that is the thing. Okay. Anybody have any doubts in the live stream?
Any doubts? Anybody have any more doubts? Anybody have any more doubts in the live stream? Anybody have any more doubts in the live stream? Ask your doubts. Is your anything we have? No. Anybody have any doubts in the live stream? Ask your doubts. Okay, we have one query from Shiva. Can you explain delete duplicate in CT method? CT method, okay. CT method, right? Okay, we can do it. CT method, no? Okay, let's use Windows function then. One way to do it is like Windows function. What my thought process is like, I will add a number and on the side column and I will use it. ठीक है? How to delete duplicates. ठीक है? चलो. Suppose we have something duplicate like example, what we should take care of. What example should I take? Duplicate, na? Okay, let's take an example from supply chain point of view. ठीक है? Supply chain point of view. Suppose during inward of product means in supply chain what happened? In, then inventory, then out. I mean inbound, then inventorize, then outbound. ठीक है? Suppose by mistakes what happened? By mistake what happened? A same QR code is been scanned 3 times. ठीक है? Suppose same fridge 1 has been scanned 3 times. ठीक है? And in that we get a detail like fridge 1, I would say related to what we'll say related to size. No, not size. Size will be the same. Related to uh, what we say SKU ID number. ठीक है? SKU number. ठीक, because number would be same. If fridge same fridge has been scanned, the number would be same. So let's make a table here, proper table. Suppose product ID is fridge 1 and SKU ID is FR124 and it is scanned 3 times. ठीक है? Fridge 1 FR124. Then what will happen? Fridge 2 FR225. Then like this. Fridge 1 FR124. What will happen, when you will use Windows function? ठीक है?
You can use any like row number, rank, dense rank, anything. I will show you by row number. ठीक है? Suppose we will use row number here. What I will do, I will create a window where I will partition by suppose this ID, product ID. ठीक है? What I will do, I will use row number, then I will write over partition by product ID. ठीक है? Partition by product ID. ठीक? Then I will write partition by product ID, order by anything, order by I would say this SKU ID. ठीक? Like that. What will happen, you know what SQL will do? SQL will create a window in product ID. What it will do, it will create fridge 1, fridge 1, fridge 1 का सॉरी फॉर द स्पेलिंग बाय द वे, हाँ इसका क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ विंडो, ठीक है, फॉर fridge 1 for product ID. It will create a second window for this fridge 2 के लिए it will create a second window. And what it will do, fridge 1 का एक window it will create, that means it will show FR124, 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 and it will show like this 1 2 3. Same thing it will do for fridge 2. Do we have any or okay, we have one fridge 2, right? So why I'm doing this? Yeah. Second, it will create a window for fridge 2 and it will write what is the thing, FR225. ठीक है? And it will show 1 because in this window, in this fridge 1 ka window, there are 3 items. It will create 1 2 3, means inside a window it will give a row number for everything. For second category, it will go कि चलो fridge 1 का data is done, now let's go to a different product and see कि what we have in that different product is fridge 2 and that have only one product. ठीक है? So like that one, what I will do after that, after creating this windows function, ठीक है, I will give a ct, suppose with t1 as this windows function का rule, I mean windows function का query I will write. Then what I will do, I will duplicate, I mean delete the duplicate. ठीक है? How to delete it? Then I will write a query. Sorry for that. Simple. Delete from T1 where this Windows function ka whatever, like I give an alias of suppose number of scan. ठीक है? NOS where NOS is greater than 1. What it will do, it will delete all those data which is greater than 1. ठीक है? It will delete all those data. ठीक? And you will say like greater than 1 मतलब देखो हर कैटेगरी का एक विंडो क्रिएट होगा. For fridge 1 same category, it has been scanned 3 times, same 3 times, it will delete these two things, 2 and 3. For fridge 2 it is scanned one time with one category, there won't be any 2 or 3 after that, means one time scan. And you know each and product have their own unique ID. ठीक है? So this unique ID is there, we are taking the product ID as a unique ID. ठीक है? Because we do partition by in this partition by product ID. You know each and every product
if you go and see the case of any product, you will see each and every product have their own product ID, unique product ID in the world. In, I mean, like your mail ID, it is unique. You will be having that unique mail ID with yourself. There won't be any second same mail ID won't be there all over the world. It is like that. So each and every product have their own product ID. So if the same product ID has been scanned multiple times, it will show like this product ID three times, this product ID one, like that. So whatever product ID has been scanned more than once, it will show either one, two, or one, two, three. So in this way, you can use CT with the Windows function, and you can delete whatever product ID has been scanned more than one time. So product ID greater than one, it will get deleted. So in this scenario, what will happen? 2 and 3 will get deleted, and you will get fridge 1 FR124 like this in the output. Fridge 1 FR225 1 like this you will get. Okay. This is how you will delete duplicate in SQL using CT method. I hope you got it, Shiva. Sai. I hope you got it. I hope you got the answer. So it is like 1 hour. Let me just, yeah. And the correct answer, people have given Power BI service. That's the correct answer for that. That's the correct answer for that. Power BI service is a tool which supports scheduled automatic refresh. Okay. So that's a good thing. People have given correct answer for that. So anybody have any doubt in this? Any doubt? You can ask me in the live stream. Anybody have any doubt in this? You can ask me in the live stream. Anybody have any doubts? You can ask me out related to SQL, related to Python for data analytics. Just ask your doubts. I will help you out in that. Okay, we have one more query. Yes, I think we want to first make partition. After that, we delete partition data. Yeah, this is what I've done. See, with table, matlab with CT, we have done this. This is the first query. This is the second query. Okay, like this. First, we did partition. We have given a created a number column kind of thing, number column kind of thing we have created. After that, from that CT, from the T1 CT name we have given T1, we delete those numbers which are greater than 1. Okay, that is the thing. First we have given first we have given a new column with the numbers in this Windows function using the CTE. Then with the help of CTE, we are deleting the data where it is greater than 1. We have done that. So this is the thing, right? I will give you the link for the notes in my Telegram channel as well as in my this YouTube post as well. You can check the notes. Okay, you can check that notes. This is what I have written. First partition by, then we delete it, right?
ठीक है. Okay, by that time, let us work on this thing. Take anybody have any doubt, they can ask your doubts, no worries for that. And in this question, in this is active wala question, we can directly use case when. There is no need to use any regex. है कि नहीं? Simple we will write as active raw. Then we will use case when. Is active raw in, suppose what are the scenario, yes is there, then y is there, then 1 is there, and 1 we have to give in string wala format, मतलब जो string quotation mark है we have to give, we have to write 1 in that. Why? Because it is character varying, right? Character varying मतलब text format kind of, text में ही रहता है वो, इसीलिए. Anything more we have? Yeah, we have yes, then we have true as well. ठीक है. Case when this equal to this, then yes, उसके बाद we write when, simple, when is active raw in, suppose आप लिखते हो no, oh sorry, you write no, then what is there, then you write 0, then you write n, then you write false. ठीक है. तब क्या होगा, you can easily say when all these stuffs come in the data, you can write a no. Else, simple, else null. And why I am writing this else, I can have used here ki, then yes else null, because see, if you observe the data carefully, you can directly see that there is a null value in that. ठीक है. There is, I mean, null value मतलब blank is there. So for that you can easily write null and you can execute it. See what we have received. For blank it is null, simple, and for others it is yes yes yes, no no, yes no, true के लिए yes, false के लिए this. ठीक है. This is the thing. Okay, we have one query. Okay, thank you for explaining. Okay, wait, I think we have a doubt here. Thank you for explaining. In this weekend, you make Zoom meet. We can ask doubt directly, face to face. We meet. I actually want to make this Zoom call and all, but the thing is, I'm very much busy in my freelance work. Let me tell you, once I am very much okay with the YouTube thing, once I am very much okay with it, with this, I will stop my freelance work and we will start a doubt session using Zoom class as well. ठीक है. Zoom या तो we can go with this Discord, anything we can go. ठीक है. ठीक है. But the thing is अभी freelance work में I am very much into it, very much busy into it. The reason you know why? Because it is December time, and mainly the thing is the client, or anywhere you go to corporate sector, anywhere the client, if the client is a foreign client, then there is really a headache for the Indian employees. Do you know why? Because they go for leave, matlab November and December full month and January till second week. So we have to work for their team as well. That is the reason, if I get good amount of time, we will start with the Zoom classes. ठीक है. Zoom classes मतलब Zoom का, हाँ, doubt classes और Zoom classes, anything you can say. ठीक है. We can start with that, right? It would be better. It is like it is taking a lot of time for you all to write
all those questions here in this. Okay, I can understand that it takes a good amount of time, but once I'm done with my work with this freelance client properly and my YouTube goes very very well, then we can actually start with this thing. Okay, right now the thing is there are not much, like there are, you can see the subscriber count is in thousand only, मतलब not even 1500. ठीक है, once we are having a good amount of subscribers, then we can either start a Discord channel or we can either start a Zoom class every day where people can join and ask doubts. And also in Zoom class there will be good amount of, मतलब क्या बोलते हैं, good amount of productive doubt clearing things will be done. ठीक है, so we will be doing that as well, right? I hope you understand this. Due to work issue only I'm not able to do it, otherwise I am really up for this idea. Like most of our people, matlab, in my live stream most of you have told related to Discord and all. I have not used Discord much, but here in our live stream people have told in Discord you can do matlab, just like Zoom, you can just ask your doubts face to face or audio will be on, kind of things are there, same features as Zoom. So that's the thing, like if I'm having a good amount of time and we have a good amount of subscribers, then it is really a productive way to solve doubts and do interactive sessions as well. ठीक है, so anyways, if you want to ask any doubt apart from this, matlab what we say, apart from what apart from live stream, you can take my mail ID. My mail ID is here. You can take my mail ID and ask me doubts. I will reply you to this mail as well. ठीक है, I will reply to that. So no worries about it. I will be available in mail as well. You can just ask your doubts. Like if you get any doubt after the live session, you can ask your doubts, or anything you have any doubts or any error doubt also. You can just take the screenshot of that error and send it. I can help you out in that. Okay? That is the thing. So okay. By that time what we have seen the use of case when as well. Without use of regex we can do the cleaning part in the raw data set. Okay, so this is the thing. मतलब what I'm trying to say कि everywhere we do not need the regex kind of thing. We can use case when and we can sort out the issue as well. ठीक है, that is what I'm trying to say. So right now, I think this is the last column related to this. क्या हो? Related to city column. ठीक है, let's see what we have in that. First, let's write. Sorry. हाँ चलो रॉ कस्टमर से let us see what we have in this. Okay, city raw करके एक है. ठीक है, let's write this. What we have, let us explore. First thing first, we have to explore all those things in the data set, then only we have to create a thought process after that, right? So it is like select, हाँ मतलब city row का column ही मैंने select किया. Let's take that out and sorry, where is it? Yeah, let's take that out and check out here like what we have in this. ठीक, so let us see it properly. We have space issue, that is obviously. Then case issue, matlab lower case upper case, it is like that mixture of lower case
प्लस अपर केस, ठीक है, mixture of lower case and upper case. Then why space issue is there? Somewhere it is correct, somewhere everything is small, like that. Hmm. ठीक है. Right now what we will do, first of all we will trim all those spaces, ठीक है, first of all we will trim all those spaces. Let's see how to do it. I will write we trim city raw as partial clean city, ठीक है. So we have like that. Right now what we have done, we have cleaned all those things from starting of the, I mean to say this, starting of the city name and end of the city name, ठीक है, right. Right now what we will do, we will use the same thing in this, what was the thing in it करके कुछ था, I forgot about it. Let me remember what was the thing in it. What was the thing? Do we have any more doubts? Like you can ask your doubt by that time. Let me think. In it करके कुछ था, I forgot about it. In it cap था क्या? It this. हाँ. In it cap करके है. What happened in it cap? Whatever name is there. Whatever name is there. Till the first space, the first letter will be in uppercase. Other letters will be in lower case. ठीक है. Till the first space. If there is a name, write XYZ space ABC. Init cap में क्या होगा? What will happen? It will become XYZ. First letter will be capital and the second will be ABC, like that. So init case is the thing and we have done it. ठीक ठीक है. This is the thing. So we have seen, and this was the last question as well. We have seen the use of data, like how we do data cleaning in real way, kind of thing, in real way. And we have also seen the use of regex as well. We have also seen the use of data cleaning path without using regex, just using case win, ठीक. Also we have learned a new thing called init cap, ठीक है. So anybody have any doubt? Anybody have any doubt in the live stream? ठीक है. Anybody have any doubt in the live stream? Anybody have any doubt in the live stream? Actually, the thing is, the client is messaging. I have to message him as well. That is the thing. So no need to worry about. I am just waiting for your messages. And let's see. Okay, we have one query from Shiva Sai. Okay, just a minute. I think we have a doubt in that. We will clear it out. What is the doubt? Uh, Difference between correlated subquery, okay, versus nested. Okay, okay, chalo. Uh, okay, wait, let us understand first nested one. Nested wala easy hai, that's why I'm saying nested subquery. And second is what? Correlated subquery. ठीक है? Nested and correlated subquery.
अब इसमें what things we will learn, चलो. Okay, I will make a small table. एक small table बनाते हैं. In that we will learn. Suppose supply chain का कुछ लेते हैं. Wait, let me remove the charger. It is suppose example. Suppose we go to a milk industry supply chain kind of thing. ठीक है. Milk industry supply chain. Example I am saying. Example. Suppose we have data here. Uh, what data region दे देंगे. हाँ चलो. Suppose we have data here. सब ID. चलो ID दे दो. फिर फार्म लोकेशन. फार्म का लोकेशन दे दो. फिर फार्म का लोकेशन इन व्हाट एरिया. फिर फार्म एरिया की जगह रीजन दे दो. इट इज बेटर. रीजन बेटर रहेगा. मतलब आई कैन यूज नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. वेस्ट ईस्ट. ठीक है. और फिर क्वांटिटी दे दो. क्वांटिटी इसमें मिल्क का क्वांटिटी क्या है? लीटर ना. लीटर में दे दो. ठीक है. सपोज वी हैव आईडीज. ठीक है. लेट्स टेक 4 इट वुड बी बेटर. थोड़ा बड़ा टेबल करते हैं. एंड वी हैव फार्म लोकेशन एज लोकेशन ए बी सी डी. एग्जाम्पल. Region, let's take two same region. Wait, let's take north and south. ठीक है. दो रीजन लेते हैं इसमें. ठीक है. लेट्स मेक इट इजी. ज़्यादा टेबल नहीं लेते. लेट्स मेक इट दैट. एंड लीटर में कितना इसमें 120 कितना ले 30 के उसमें ले लें क्या? लाइक 150. लेट्स 200 300 करके कुछ ले लेते हैं. 190 80 चलेगा चलेगा. 180 ले लेते हैं. सो दिस इज द टेबल. ठीक है. इसमें से हम लोग सीखेंगे व्हाट इज नेस्टेड एंड कोरिलेटेड सब क्वेरी. ठीक. बिकॉज यू हैव टोल्ड वेयर वी कैन यूज. यू कैन एक्सप्लेन इट. या आई विल एक्सप्लेन इट इन दिस. जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया इन दैट. इट विल बी इजी फॉर यू टू कोरिलेट विद अदर टेबल्स. ठीक है. Nested subquery. Why nested subquery? Because it is the easiest one. That's what I'm saying. ठीक है. In this nested subquery, what happens? It is independent kind of thing and it runs only in one way. I mean, if you want the kind of average quantity, हाँ average quantity निकाल सकते हैं. If you want to find the average quantity overall and want to just use it in a filter way. मतलब you want to find the average quantity and compare it with the all the liters in this. You will use a nested subquery. कैसे यूज करोगे? I will write select everything from milk supply chain. milk SC supply chain लिख दियो. Where what is the table where liter is greater than. Here I will use the subquery nested one. ठीक है. And it gives you the overall average and it execute once and it will give you one data in a new column. ठीक है. Just write select average of liter from the table. Same table from milk SC. What will happen in this? Whatever data मतलब whatever liter which is greater than the average one, it will show you. Let me tell you that what data it will show you. Calculator में let's check that. This like 120 plus 150 plus 200 plus 180 divided by 4. So average is 162. Whatever things which is greater than 162, it will show you in the output. So in this 200 and 180 will be shown in the output. ठीक है. Simple as that.
This is nested. Have I written this? Nested subquery. Up right now, let's move to what you was correlated. Correlated subquery. ठीक है. अब correlated subquery in this, what happens is like you will be using one big query in this. Like we have used only one normal query in nested. Correlated में क्या होता है? It runs repeatedly वाला thing. मतलब repeatedly वाला thing you will be using it. I mean to say, in the subquery, in the correlated subquery, the inner query will run for each row in the table. That is what I'm trying to say. ठीक है. Okay, let me show you in this, क्या बोलते हैं, in this example. You will write, suppose, select everything from milk supply chain, and here also we will use this where filter, where liter greater than, earlier we have used the average, right now we will use the average but using a another filter here. कैसे? Let me show you. We will write select average of liter from the same table, which is milk SC. ठीक है. Where the wait, okay, here we should give a alias or it will be an issue. I am giving a alias like A and B, where I will write, B dot region equal to A dot region. Like this I will write and I will execute it. Simple as that, right? So this is called correlated subquery. I hope you understood it. Nested and correlated subquery, and this is the explanation of it, right? Okay, what we get in this, see, it will take the average of both the region, because we have given filtration in all. मतलब नॉर्थ रीजन का एवरेज इट विल टेक, एवरेज कितना होगा नॉर्थ रीजन का, 120 प्लस 150/2, तो कितना है 5 6 7 270/2, कितना होगा 1 2 3 6 2 5 135 लीटर. एंड साउथ रीजन का अलग से एवरेज दे विल फाउंड. व्हाट इज द एवरेज फॉर दैट? 200 प्लस 180, 380/2. 380/2 कितना होता है? 200 2 3 1 2 2 9 जा 18 10. तो what will happen, whosoever like quantity is greater than 135 in north region, let me see, 135, okay, this farm location B will be there in the output, and for south it was like 190, I think so. ठीक है. For this 200 will be there in the output, so only location B, location C of north, location C of south will be there in the output, because it was like 150, and 150, as you can see, is greater than 135, and for south it was 200, so 200 is greater than 180, so this will be there in the output. ठीक है. This is the thing, correct? I hope you got the answer for that. Or if you want a simple explanation, I would say nested subquery is a kind of normal subquery that runs independently and gives a result to the outer query, while a correlated subquery depends on the outer query and runs once for every row of the main query. ठीक है, simple as that.
And also one more thing, like you have seen nested query we have used when you need one time result like average of liters, ठीक है. But correlated, what we have seen in correlated, we have used when we need रो बाय रो कंपैरिजन. रो बाय रो मतलब जैसे रीजन, हर रीजन का कंपैरिजन हमने किया, मतलब नॉर्थ रीजन का देयर आर टू डेटा, साउथ का टू डेटा इज देयर. सो फॉर टू डेटास, आई मीन रो बाय रो कंपैरिजन, it is given, ठीक है. Like this, like checking for each farm in each region, we have seen the output for this correlated subquery. Like I hope you got the answer, ठीक है. That is the thing. Yeah, hi others, welcome to live stream. हाय आदर्श, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. भाई थोड़ा सब क्वेरी समझा दो, रिलेटेड को रिलेटेड, ठीक है. देखो, सिंपल, रिलेटेड को रिलेटेड, रिलेटेड को रिलेटेड, नॉन को रिलेटेड. अच्छा, मतलब नेस्टेड और को रिलेटेड आप कब बोल रहे हो, ठीक है. नेस्टेड में क्या रहता है, सिंपल सा बात है. नेस्टेड में क्या रहता है, वो वन टाइम कंपैरिजन के लिए यूज होता है, सिंपल. लाइक कि आपको क्या फिर से एग्जांपल से समझाऊं कि क्या, वो आप बोलो. जस्ट अ मिनट, एक बार मेरा क्लाइंट का एक मैसेज कर दूं. तब तक आप बताओ कि आपको इसमें सीखना है क्या, मतलब रिलेटेड टू द एग्जांपल. वो बोलो तो समझा दूंगा, नहीं तो नॉर्मली समझा रहा हूँ. फिर आप बोलो तो एग्जांपल से भी समझा दूंगा, ठीक है. नेस्टेड सब क्वेरी एक नॉर्मल सब क्वेरी की तरह होता है जो इंडिपेंडेंटली चलता है और अपने जो रिजल्ट है वो आउटर क्वेरी को दे देता है. जबकि को रिलेटेड सब क्वेरी आउटर क्वेरी पर डिपेंड करता है और मेन क्वेरी के हर रो के लिए बार बार रन होता है. नेस्टेड सब क्वेरी मैंने क्या बोला, नॉर्मल सब क्वेरी होता है जो इंडिपेंडेंटली चलता है और अपने रिजल्ट्स को आउटर क्वेरी को दे देता है. मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आउटर क्वेरी को देके इट विल फाइंड द रिजल्ट. लेकिन को रिलेटेड सब क्वेरी क्या होता है, को रिलेटेड सब क्वेरी आउटर क्वेरी पे डिपेंड करता है. दिस इज आउटर क्वेरी, ठीक, मतलब आउटर सब क्वेरी आई मीन टू से, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है. इस पर डिपेंड मतलब ये एवरेज पे डिपेंड करेगा और एवरेज पे डिपेंड करने के बाद वो हर रो पे रन करता है और आउटपुट फाइंड आउट करता है, ठीक है. और नेस्टेड सब क्वेरी तब यूज होता है जब हमें एक ही बार का रिजल्ट चाहिए होता है. जैसे एवरेज हमने यहाँ फाइंड आउट किया, एवरेज ऑफ लीटर्स, ठीक है. एवरेज ऑफ लीटर्स वो क्या करेगा, साइड में एवरेज ऑफ लीटर्स का ऐसे एक कॉलम, बैकएंड में बोल रहा हूँ, बैकएंड में कितना आया था एवरेज ऑफ लीटर, 162.5. वो बैकएंड में 162.5 का एक कॉलम बना देगा और उसी के साथ साथ वो कंपेयर करेगा, ठीक है. दैट इज द थिंग, राइट. और कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या रहता है, रो बाय रो कंपैरिजन करता है. जैसे कि देखो, इस पे जैसे है, राइट, इसमें क्या होता है, रो बाय रो कंपैरिजन करता है. क्या होता है, रीजन वाइज जाएगा और एवरेज फाइंड आउट करेगा. जैसे नॉर्थ और साउथ रीजन का मतलब, मैं इसमें जाता हूँ, ठीक है. क्या होगा, वो नॉर्थ रीजन में एक एवरेज पुट कर देगा. नॉर्थ का कितना था एवरेज, शायद 135 था, इस टाइप का पुट कर देगा. और साउथ में क्या करेगा, और साउथ रीजन का एक एवरेज पुट कर देगा इस टाइप से, ठीक है. एवरेज को रिलेटेड सब क्वेरी और नेस्टेड सब क्वेरी. नेस्टेड सब क्वेरी में क्या रहता है, हर जगह सेम एवरेज आ जाता है. को रिलेटेड में वो रो बाय रो कंपैरिजन करता है विथ, लाइक दिस. जैसे हमने इसमें रो बाय रो बोला, मतलब नॉर्थ वाइज बोला, नॉर्थ और साउथ का मुझे एवरेज चाहिए. एवरेज ही हमने फाइंड आउट किया बट ऑन अ रो बेसिस, नॉर्थ बेसिस, साउथ बेसिस, इस तरीके से. और ये नॉर्थ और साउथ का अलग से कैसे हुआ, वो हुआ आपके आउटर सब क्वेरी में. देखो, देखो ये कहाँ गया, यहाँ देखो आप. आउटर सब क्वेरी में हमने जो लिखा वो पहले रन करता है. आउटर सब क्वेरी में जो आउटपुट आया रन करने के बाद इधर शोकेस होगा, देन वो फिल्टर करेगा. फिल्टर कैसे करेगा,
इसको चेक करेगा इसके साथ, इसको चेक करेगा इसके साथ, क्योंकि हमने क्या दिया था, लीटर्स ग्रेटर देन एवरेज लीटर, ठीक है। सेम चीज इसमें हुआ, मतलब साउथ का चीज नॉर्थ के साथ कंपेयर नहीं करेगा या नॉर्थ का साउथ के साथ कंपेयर नहीं करेगा, जो पर्टिकुलर ग्रुप बना है वो उसके साथ वो कंपेयर करता है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है क्वेरीज, ठीक, राइट। और इस पे हमने दोनों टेबल को ज्वाइन किया है, काइंड ऑफ, नॉट ज्वाइन बट काइंड ऑफ सब क्वेरी यूज करके, ठीक है। हालांकि ये सेम चीज जो है, जो आप सब क्वेरी बोल रहे हो, को रिलेटेड सब क्वेरी आप विंडोज फंक्शन से भी कर सकते हो। विंडोज फंक्शन में कैसे करोगे, आप सिंपल रीजन जो है, रीजन, उसको आप क्या करोगे, उसको आप क्या बोलते हैं, विंडो क्रिएट कर दोगे, मतलब नॉर्थ का एक विंडो क्रिएट कर दिए, साउथ का एक विंडो क्रिएट कर दिए, और जैसे रो नंबर के जगह एवरेज दे दोगे लीटर्स का, ठीक है। देन एवरेज लीटर्स का देने के बाद आप क्या करोगे, एक विंडो फंक्शन क्रिएट करोगे ओवर पार्टीशन बाय रीजन, ठीक है। अब क्या करेगा, ओवर पार्टीशन बाय रीजन में हर रीजन का एक पार्टीशन कर देगा, नॉर्थ रीजन में जो भी एवरेज है वो करेगा, साउथ रीजन का जो एवरेज है, वेस्ट का, ईस्ट का, इस तरीके से उसको आप सीटीए देके देन यू कैन कंपेयर। दोनों तरीका सेम है। अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा मेरे को इजी लगता है, मेरे को विंडोज फंक्शन ज़्यादा इजी लगता है सीटी के थ्रू। मैं सब क्वेरी थोड़ा कम ही यूज़ करता हूँ, बट एनीवेज आप लोग का कुछ भी डाउट हो सब क्वेरी में आई कैन हेल्प यू आउट, राइट। तो आदर्श, आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। ओके, वी हैव वन क्वेरी फ्रॉम शिव, यू एक्सप्लेन विद सिंटेक्स इजी अंडरस्टैंडिंग। हाँ, सिंटेक्स के साथ थैंक यू फॉर दैट, आई हैव मेड श्योर कि एग्जाम्पल के साथ भी आप समझो। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन, प्रॉपर सिंटेक्स आई हैव यूज्ड, ठीक है। Proper syntax I have used and all. So I hope you understood it properly, right? So still, okay, it's going to be 11 right now. So by that time, let's close the live stream right now and let's meet tomorrow again, mm, in the new live stream. ठीक है? Let's meet tomorrow again in the new live stream. Till then, bye bye everyone. And it was a great session, by the way. Lots of good doubts, lots of productive सेशन, मतलब प्रोडक्टिव डाउट सेशन था आज का, ठीक है। प्रोडक्टिव लाइव सेशन था, इट इज़ बेटर टू से दैट। लॉट्स ऑफ गुड क्वेश्चंस एंड थैंक यू फॉर joining my live stream and asking these questions. I am really happy with that. Like people are actually like wanting to understand all those things, so I am happy with that. So thank you everyone for joining my live stream. So let's meet tomorrow again in the new live stream. Till then, bye bye everyone, take care, happy coding, happy learning, and let's meet tomorrow again in the new live stream, ठीक है। चलो